Hi, welcome to this unique haircare initiative by IPCA. I'm Mona Sharma and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with hair care. Our hair is a crowning glory and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, it used to be a sign of middle-age problem when you used to lose hair or have thinning of hair or bald patchy hair. However, with increasing pollution and the increase of stress in our daily work life, we are now seeing hair problems occurring even at a younger age. It is not uncommon now to see 25 to 35 years old people complaining about hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well and much of the hair loss can be avoided. Today, we have with us Dr. Mithila Vanarase, is a well-known dermatologist and has been practicing medicine for over many years. She is MBBS MD, specializes in dermatology, cosmetology, and hair transplant. Currently, she's practicing as consultant dermatology in Phoenix Skin, Hair, and Laser Clinic, Ahmednagar, and also working as an assistant professor in Dr. Vithalrao Vikhe Patil Medical College, Ahmednagar. Doctor has dedicated her career to diagnosing and treating a wide range of hair and skin conditions by providing personalized services to her patients. She takes time to listen to her patient concern and work closely with them to develop a treatment plan that meets their individual requirement. Doctor is also aware of the need for the patient awareness and education about hair care and spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you so much, Doctor, for sparing your valuable time to answer a few questions on hair care for us today. Welcome to this YouTube live show. Okay. Dr. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. So today we are going to talk about hair care in current scenario. So whenever we talk about hair care in current scenario, very common problem which is faced by all of us is dandruff. So can you please explain, like, with your profound experience, like what is dandruff, and can we cure this dandruff with anti-dandruff shampoos? See, basically, dandruff is a very, very common scalp condition. It is not necessarily that every dandruff patient has a pathological problem. Dandruff Mm-hmm. can be a tendency. So, Mm-hmm. basically, it manifests with excessive shedding of a scalp skin cells, dead skin cells. एंड उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. एक माइल्ड डैंड्रफ होता है जिसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं. बेसिकली जो पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, ठीक है, या फिर ओवरऑल हार्श केमिकल्स कॉस्मेटिक्स का यूज होता है, उनकी स्कैल्प ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि बहुत ज्यादा वहां पे ऑयल प्रोड्यूस होता है एंड वो ऑयल स्किन के सेल्स के साथ मिक्स करके वहां पे डैंड्रफ फॉर्म होता है. एंड Mm-hmm. अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन वेदर वी कैन क्योर डैंड्रफ विद एंटी डैंड्रफ शैम्पूज. So if dandruff is a very mild variety, then we can definitely control it with anti-dandruff shampoos. But if it is associated with some pathological disorder, such as seborrheic dermatitis या फिर कोई fungal infection है, ठीक है, या फिर psoriasis है, then उसके Mm-hmm. साथ आपको और एक ट्रीटमेंट भी कंबाइन करना पड़ता है. ठीक है, तो जो भी कॉज है, सिबोरिक है तो एंटी फंगल्स देने पड़ेंगे, सोराइसिस है तो एंटी सोराइटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, Mm-hmm. हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस है जिसके वजह से ऑयली स्कैल्प बढ़ रही है तो वो कॉज को भी ट्रीट करना पड़ता है. इन दैट केस जस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज इज नॉट सफिशिएंट. ओके ओके, लाइक आप अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हो और आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू विजिट द डॉक्टर इंस्टेड ऑफ कीप यूजिंग एंड चेंजिंग द शैम्पूज. ओके. डेफिनेटली. सो डॉक्टर, दूसरा एक चीज ये भी है कि जब भी हम लोग को डैंड्रफ होता है तो जैसे दादी एंड मदर्स वो बोलते हैं होम रेमेडी यूज कर लो, जैसे लेमन लगा लो या फिर कर्ड लगा लो ऑन द स्कल्प टू ट्रीट द डैंड्रफ. So should we use these kind of remedies, or should we just go to the doctor and ask, like, can we cure it? See, if you look at the content of curd, theoretically it is a very good hair mask because Mm-hmm. curd में there is antibacterial properties, soothing properties, antifungal properties. So technically it should help. But if one of the patient is sensitive to curd, then that patient can react to the curd and sensitivity scalp की बढ़ जाएगी, उससे फिर से dandruff पड़ेगा. And if you don't use the right amount of curd, then Mm-hmm. curd can produce a greasy scalp, oily scalp. उससे भी dandruff बढ़ सकता है. So basically it is a double-edged sword. In few cases it may work, but it is not 100% formula that it should work. So Mm-hmm. you can try it once in a while, but if it is not working,
don't keep on trying and giving permutation and combination. It's always better to visit a local dermatologist. They will help. Mhm. Okay, quite interesting. Like not every form of treatment can suit you. It's always depend person to person. Yeah. Okay, so doctor, like the जब dandruff के वजह से sometimes we also see like hair fall and some people have like severe form of hair loss. So is it because of the dandruff? So can dandruff lead hair loss? Uh, if you look a direct connection between dandruff and hair loss, there is not no such connection. So every dandruff case is not related to the hair loss. But Mhm, if there is little moderate variety of dandruff or severe variety of dandruff in which mhm, there is associated some pathological disorder, तो उससे क्या होता है स्कैल्प में जो बाल है अपने तो mhm, रूट को देयर विल बी इन्फ्लेमेशन सूजन होगी उसके वजह से the strengthening to the scalp anchoring will be little loose and उसका इफेक्ट हो सकता है कि हेयर लॉस हो सकता है another thing क्या होता है कि most of the cases dandruff is associated with some nutritional deficiency कि zinc mhm, deficiency होगी biotin deficiency होगी and mhm, that is cause for hair loss also so both can present simultaneously so it is not due to dandruff both can happen due to same cause so ऐसा हो mhm. सकता है Okay, okay. So combination of problems can lead to hair loss. So doctor, like एक चीज मैं कुछ मुझे भी डर लगता है like if you use someone's pillow or towel then if like for example a person have a dandruff and I use a pillow or towel I may get dandruff. So is dandruff communicable or can it pass from family members like from mother to son and from father to son or is it like genetic also? see for dandruff patient, maintaining a hygiene is very, very important. So basically, try to avoid any towel or pillow sharing. Mhm. And another thing is dandruff is not that contagious condition. Contagious Mhm. मतलब communicable जो छूने से फैलने वाली चीज होती है. Dandruff 100% छूने से नहीं फैलता है. Mhm. But dandruff is a tendency जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने ये किया था. तो फैमिली में एक टेंडेंसी रन करती है ऑयली स्कैल्प की. तो Mhm. फैमिली में रन कर सकता है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स बट इफ Okay. यू आर नॉट जेनेटिकली रिलेटेड टू दैट इंडिविजुअल तो वो Mhm. ऐसे छूने से फैलने वाला है Okay. So छूने से नहीं फैल सकता but yes genetic tendencies होती हैं हाँ and डेफिनेटली more. होती है जेनेटिक Yeah. टेंडेंसीज होती है Okay. Okay. So doctor like आजकल इतने सारे oils आ गए हैं on social media they say that then using this hair oil your dandruff will go away and hair will also grow. So these oils really help in treating dandruff. इफ यू आस्क मी डायरेक्टली हेयर ऑयल एप्लीकेशन कैन डेफिनेटली इंक्रीज योर डैंड्रफ टेंडेंसी Mm. क्या होता है हमारे बाल जो बाल होते हैं वहां पे एक सिबेशियस नाम का ऑयल का ग्रंथि होता है उसका Mhm. ओवर प्रोडक्शन से ही डैंड्रफ बढ़ता है इफ यू Okay. ऐड ऑयल एडिशनली तो जो डेड Mhm. सेल्स हैं उसके ऊपर डैंड्रफ मतलब ऑयल का एक लेयर फॉर्म हो जाएगा इफ यू अप्लाई दैट ऑयल एंड कीप इट ओवरनाइट या फिर इफ यू गो आउट उसके ऊपर डस्ट Mhm. का लेयर फॉर्म हो जाता है एंड ये सबसे स्कैल्प और इरिटेट होती है एंड डैंड्रफ Mhm. बढ़ने के चांसेस होते हैं if I Mhm. say directly कि don't apply oil, it is not acceptable in our Indian culture. So Yeah. basically, I will say if you have to apply a oil, if you like that oil or if you feel that ये oil apply करने के बाद ही मेरा texture सही रहता है बालों का, you can Mhm. always apply oil just like 1 hour before or 30 minutes before taking bath. तो उससे Okay. oil is basically a very very good conditioner for your hair. So you can Mhm. apply oil on the tips and Mhm. avoid direct oil application on the scalp. So Mhm. आपको oil के benefits भी मिल जाएंगे और उससे dandruff पड़ने के chances भी कम हो जाएंगे. Okay, so these oils are only like for moisturizing. If you think कि Yeah. dandruff चला जाएगा या बाल लंबे हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है. नहीं बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करता है ये एंड Mhm. जिनकी बहुत ड्राई स्किन है होल Mhm. बॉडी पे एंड इसके वजह से स्कैल्प में भी ड्राई स्किन है उनमें वो Mhm. सूदने का काम डेफिनेटली करेगा बट डैंड्रफ का पेशेंट ही है उसमें बढ़ने के चांसेस हमेशा ही रहेंगे Okay.
ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर। सो लाइक एक और चीज है जो कि लाइक कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो पीपल हु आर प्रोन टू रैंडम देन दे कीप आस्किंग लाइक इज इट एज स्पेसिफिक, लाइक अडल्ट्स को कम होता है, टीनेजर्स को ज्यादा होता है, और कभी कभी वी सी like the newborn baby also have a lot of dandruff, so the mother should get scared of it, or like can you please enlighten us today the transition of these dandruff problems? सी डैंड्रफ कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। Mm, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप इफ यू आस्क मी प्यूबर्टल होता है, जब बाकी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बिकॉज जो ऑयल ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वो हार्मोन डिपेंडेंट डेवलपमेंट होता है। तो इट विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 13-14, एंड उस टाइम पे डैंड्रफ बहुत ज्यादा दिखता है। बट दैट डजंट मीन अ न्यूबॉर्न और चाइल्ड विल नॉट प्रेजेंट विद द डैंड्रफ। मैटरनल एंड्रोजन मतलब जो मदर के जो हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन्स, वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी को पास होते हैं, उसके वजह से डैंड्रफ होता है बच्चों में। दैट वैरायटी इज कॉल्ड एज क्रेडल कैप। So in okay. that, infant presents with a yellowish greasy scales which are Mhm, very adherent to the scalp. And don't okay. worry about that condition if any baby of your family is suffering from that problem, because it is usually self limiting. अपने आप Mhm, ठीक हो जाता है। अगर बिल्कुल okay. ही ठीक नहीं हो रहा है, if baby is little symptomatic, you're worried, then you can Mhm, try to apply a petroleum jelly mhm, 1 to 2 hours before taking bath। उससे वो स्केल जो होता है, जो एडरेंट mhm, स्केल होता है, mhm, वो लूज हो जाएगा। एंड उसके okay. बाद वेरी वेरी माइल्ड शैम्पू से यू कैन वॉश द Okay. Okay, so Vaseline लगा के and then after using a mild shampoo wash it off, then उसे धीरे धीरे करके चला जाएगा. एंड इफ इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज Hmm. विजिट लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, इट इज सेल्फ लिमिटिंग। Okay, okay, that's great, doctor. Like it's a very good technique which you told us today. Like apply Vaseline instead of getting scared on babies, or go to the doctor. So, doctor, another very common question is like even sometimes when I get dandruff, I try to wash my hair frequently, thinking that it will wash away. So, should we wash our hair every day if we have a dandruff? Everyday washing hair is not recommended. Mm-hmm. If you have very silky and straight hair, it Mm-hmm. may suit your hair, but if you have a curly and wavy hair and if you wash your hair too frequently, it can increase the frizziness of your hair. एंड Mm-hmm. इफ यू हैव अ लाइफस्टाइल जिसमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, Mm-hmm. कि इफ यू आर अ फील्ड वर्कर और इफ यू गो टू द जिम एवरी डे एंड यू फील कि देयर इज बहुत इचिंग हो रहा है, ऑयली स्कैल्प है, देन यू कैन वॉश योर हेयर। फॉर Mm-hmm. फीमेल्स यू कैन वॉश योर हेयर alternate day with very mild shampoos, and if you are facing a issue of dandruff, then you can use anti-dandruff shampoo Mm-hmm. once or twice a week depending upon your severity. For Okay. males, you can wash your hair with plain water every day and use alternate day Mm-hmm. shampoo, very mild shampoo, and again anti-dandruff shampoo once or twice a week depending upon the severity. So you have to decide what is your hair fiber quality, hair length, and then you can decide the application. It's not universal. Okay, doctor, quite interesting. So, doctor, earlier you said that even someone who is like having poor diet or poor in nutrition, they can have a dandruff problem. So, like in a diet, these vitamins, mineral tablets have any role in treating dandruff? Yeah, definitely it has a role in treating dandruff. If you consider diet, तो Mm-hmm. डाइट में वहाँ पे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। सो व्हाट यू आर आस्किंग मी इज अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें जिंक है, बायोटिन है, और इसके डेफिशिएंसी से स्कैल्प का बैरियर फंक्शन, मतलब स्कैल्प का एक डिफेंस सिस्टम होता है। स्कैल्प मतलब जो स्किन है बालों के नीचे की, उसका डिफेंस सिस्टम कम होता है, वो सेंसिटिव बन जाती है, उससे डैंड्रफ बढ़ सकता है। बट Mm-hmm. अदर वे राउंड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं,
Hmm. कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वो भी Hmm. बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर Hmm. आपकी लाइफ़स्टाइल बैलेंस नहीं है, Hmm. इफ यू आर ईटिंग एक्सेसिव जंक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, Hmm. उससे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होंगे। ये सबसे स्कैल्प की ऑयली होने की टेंडेंसी बढ़ती है और डैंड्रफ बढ़ सकता है। तो बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर Oh, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, डेली एक्सरसाइज, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल एंड विटामिन जो भी डेफिशिएंसी है वो करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। okay, very interesting, doctor. So, doctor, like there are so many hair serum, hair mask available in social media. So, can these hair masks help in clearance of dandruff? हेयर मास्क यूजुअली कंडीशनर की तरह यूजुअली प्रेजेंट करते हैं, तो Mhm. वो बालों के टिप्स को लगाया जाता है एंड डैंड्रफ इज़ अ कंडीशन ऑफ अ स्कैल्प। So if Mhm. you apply any oily product on the scalp, Mhm. it will increase the oiliness of the scalp. तो उससे डैंड्रफ बढ़ सकता है। So Mhm. choose a right product which is also very necessary. Okay. ठीक है? Okay, so that is very interesting, doctor. So, like, doctor, sometimes it's very confusing, like how to differentiate between the dry scalp and the oily scalp. So, is there any way, like, someone can, at home only can find out, like, oh, what's my scalp type is? See, यूजुअली क्या होता है, ऑयली स्कैल्प होता है तो उसमें डैंड्रफ अगर होता है तो योर स्केल्स विल बी लिटिल येलोइश एंड ग्रीजी, एंड इफ यू Mm-hmm. हैव ओवरऑल ड्राई स्किन तो Mm-hmm. वेरी टाइनी 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 स्केल्स होते हैं। जो ऑयली स्कैल्प के स्केल्स होंगे वो थोड़े से बिगर इन साइज होंगे, ये छोटे छोटे होंगे एंड Mm-hmm. उससे ऐसे वेरी लाइट इन वेट एंड फ्लेकी 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 ऐसे प्रेजेंट करेंगे ड्राई स्कैल्प में। सो ड्राई स्कैल्प पेशेंट यूजुअली हैव ओवरऑल ड्राई स्किन ऑल्सो, सो इट को एग्जिस्ट। एंड Okay. ऑयली स्कैल्प है तो बाकी जगह पे भी ऑयल देखेगा, लाइक अगर आप ओवरनाइट सोने के बाद अगर उठते हो तो योर नोज विल बी लिटिल ऑयली, योर चिन विल बी लिटिल ऑयली। जो आपका Mm-hmm. बाकी हेयरी एरिया है, मीडियल Mm-hmm. साइड ऑफ द आईब्रोज एंड चेस्ट, वहां पे भी थोड़ा ऑयल रहेगा। सो Mm-hmm. जस्ट स्कैल्प में नहीं रहता, ये जो टेंडेंसी है होल बॉडी के स्किन में भी रिफ्लेक्ट करती है। Okay, okay, very interesting, doctor. So, doctor, like even sometimes people do have, like you also mentioned, fungal infection or some pathological infection. So, how to differentiate between this wet dandruff and skull fungal infection? सी, डैंड्रफ का एक वैरायटी है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, वो भी एक माइल्ड फंगल इन्फेक्शन ही होता है, मैलेसेजिया नाम का जो फंगस है उसके वजह से होता है। एंड अनदर स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन जो टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, उसके टाइप्स ही टोटल अलग। Mm-hmm. डैंड्रफ विल प्रेजेंट इन द होल स्कैल्प, सो ग्लोबल अपीयरेंस होगा। टीनिया के अलग अलग वैरायटीज है कि ब्लैक डॉट होगा, ग्रे पैच होगा। तो ब्लैक एंड इट विल ब्रेक डाउन। ग्रे पैच Okay. में एक पैच रहेगा जिसमें बहुत सारी स्केलिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। एक Mm-hmm. कीरियन नाम का भी फंगल इन्फेक्शन का टाइप होता है, उसमें बॉगी स्वेलिंग होता है, ठीक है? Mm-hmm. इन्फ्लेमेटरी रहेगा, स्कैल्प में सूजन रहेगी, तो वो और डैंड्रफ को बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Okay. Okay. So, and doctor, there is one another thing called scalp psoriasis. So, how to differentiate between scalp psoriasis and dandruff? Scalp psoriasis will have circumscribed patches. Circumscribed patch मतलब क्या, वही जो अभी मैंने बताया कि एक-एक अलग-अलग ऐसे राउंड पैच रहेगा स्कैल्प psoriasis में मोस्ट फ्रीक्वेंटली। एंड psoriasis के स्केल्स जो होंगे वो सिल्वरी व्हाइट इन कलर होंगे, ठीक है? Mm-hmm. डैंड्रफ के जो स्केल्स होंगे वो येलोइश एंड ग्रीजी होंगे। तो psoriasis थोड़ा ड्राई ड्राई बहुत ज्यादा स्केली वैरायटी होगी। देन डैंड्रफ इज अगेन will be limited mostly to the scalp. Mm-hmm. सोराइसिस अगर स्कैल्प में है तो स्कैल्प का वो मार्जिन भी क्रॉस कर सकता है, जिसको Okay. कोरोना सोराइटिका भी बोलते हैं। एंड इफ यू एग्जामिन द पेशेंट बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स के लिए, सोराइसिस बाकी साइड्स पे आता है, जैसे एक्सट्रीमिटीज पे, एल्बोज पे होगा, नी पे होगा, नकल्स पे होगा, नेल Hmm. इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, पाम सोल्स पे हो सकता है। इफ यू Mm-hmm. एग्जामिन अ होल बॉडी ऑफ डैंड्रफ पेशेंट हु हैज अ सिवियर डैंड्रफ, ये हर पेशेंट में नहीं दिखेगा, तो आपको रेट्रो ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे, मीडियल साइड ऑफ द आईब्रोज, Mm-hmm. साइड ऑफ द नोज,
चेस्ट, यहाँ पे mm. भी थोड़ा सा ऑयलीनेस दिख सकता है। तो साइड्स अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, डिफरेंशिएट कर सकते हो वो दोनों। Okay, that's very interesting, doctor. So, doctor, like, how to prevent this? Like, now that we know that these are different type of scalp, and what are the difference between different type of infections? So, another very common question is like, how to prevent this wet scalp or dry scalp? If you ask me how to prevent a dry scalp, is use very mild moisturizing shampoos, Mm-hmm. ठीक है, and use a very good conditioner. If you have a very very dry scalp, you can use oil also, like argan oil or jojoba oil. That will help in moisturizing the scalp. Mm-hmm. And go for sulfate free shampoos. That will help to reduce the dry scalp disorders. That's And right. use lukewarm water. Don't Mm-hmm. massage your scalp while washing it. Okay. Don't use any procedures which has like heat, regular Mm-hmm. strengthening, blow drying. That can also damage your scalp. So keep it Okay. minimum. It will be balanced. Balance. And who have oily scalp, how to prevent that type of scalp? Yeah. Oily scalp, if you first go by like hygiene, so at Mm-hmm. least wash your scalp 3 times a week. Okay. Mm-hmm. Use mild shampoos alternate days and anti-dandruff shampoos once or twice a week, as we discussed. Mm-hmm. And for oily scalp is sometimes a tendency which is directly related to your lifestyle. So go for Mm-hmm. lifestyle modifications. Control your Okay. weight, control your hormonal fluctuations, Mm-hmm. control your diet, go for regular exercise, have proper sleep, drink Mm-hmm. adequate water, drink Mm-hmm. adequate fruits, Mm-hmm. salads. That will help you to avoid the oily scalp tendencies. Okay. Very interesting, doctor. Another very common question is like, like nowadays we are all stressed and working late nights and eating whatever we can. So can stress also lead to this dandruff and other Yes, severe yes. form? Yeah, definitely. Stress is directly related to dandruff, as we are discussing this point again and again, because stress is related to hormonal fluctuation, and any hormonal fluctuation will alter the oil gland activity, sebaceous gland activity. So, whenever you stimulate sebaceous gland, that patient will present with acne, dandruff, and hair Okay. loss. Okay. So stress will activate all the malicious thing in our body. So always try to manage stress. Okay, so doctor, there are so many medicated shampoos available in market to treat dandruff. So, like, there is also a combination called ketoconazole and ZPOD and moisturizer that are frequently used for managing dandruff. So, what's your opinion on it? See, combination of ketoconazole and ZPTO is definitely synergetic combination. Ketoconazole is a directly antifungal, Mm. has antifungal properties. It's an antifungal drug, and also ZPTO helps in synergizing action like antibacterial as well as antifungal properties of ketoconazole. So combination is good. We are using this combination since years together, and it definitely works in the patient. Okay, very interesting, doctor. Now, my favorite part. Can you give us some important tips for managing healthy hair? Healthy hair, first scalp we have discussed, and Mm-hmm. for hair, have a proper diet, protein rich diet that will strengthen your hair fiber. Mm-hmm. Include proteins in your diet like egg white, sprouts. Go for micronutrients, which is like multiple nuts and seeds. Hmm. Mm-hmm. Then have a proper sleep. Go for Mm-hmm. regular exercise, Mm-hmm. and it will help you to maintain the overall your health, balanced lifestyle, and that will reflect on your hair. See, hair is not a very important part of our body. Mm-hmm. So whenever body is under stress, it will reflect on least important part of our body, and that will be on the skin and hair. If something is really wrong, the body's mechanism is to preserve your important organs such as heart, liver, kidney. So any Mm-hmm. stress is reflected on the less important organs for survival. So Mm-hmm. any sign of like poor hair health or skin health is reflecting that overall your health balance is not normal. So Normal. if you see something is wrong, first correct it Mm-hmm. and
you can prevent the major mishaps. Okay. So wasting your money on all the products, it's always better to go to the doctor and spend your time and energy over there. You'll get more better results. So this discussion was very informative, Doctor. I'm sure our viewers have found this session very helpful. So can I take some live audience questions? Yeah. And the first question from an audience is, डॉक्टर मेरा ऑयली स्कल्प है, मेरी मदर का ड्राई स्कल्प है और मुझे ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो और मेरी मदर को होता ही नहीं है, सो क्या स्कल्प के टाइप के वजह से भी डैंड्रफ आता जाता है, या कौन सा ज़्यादा सीवियर है, और क्या ऑयली स्कल्प वालों को ज़्यादा केयर करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऑयली स्कैल्प में डैंड्रफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई स्कैल्प। सो फर्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू एट योर होम इज़ हम्म, वॉश योर हेयर फ्रीक्वेंटली। ऑयल हम्म, एप्लीकेशंस अवॉइड करो, ठीक है? हम्म, ओवरनाइट ऑयल एप्लीकेशन मत करो। जो भी आपको डैंड्रफ का कीटोकोनाज़ोल ज़ेडपीटीओ नाम का जो भी कॉम्बिनेशन मिले एंटी डैंड्रफ शैम्पू का, यू कैन यूज़ इट वन्स और ट्वाइस अ वीक। अगर उससे हम्म, कंट्रोल नहीं होता है तो विजिट हम्म, अ डॉक्टर। एंड ड्राई हम्म, स्कैल्प के लिए वेरी माइल्ड शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करो। Twice a हम्म, week hair wash is also enough. Go for a good conditioner that will help you to reduce the dry scalp redness. okay, okay. Very interesting, doctor. Another question is, hi, doctor. I am also from Ahmednagar. How to take your appointment? And yes, I have been facing the seborrheic dermatitis, and I use many kind of anti-dandruff shampoos. They are not going away. And doctor did some diet change in my thing, but I haven't find any good solution. Can you please help me? See, that means you don't have a mild variety of dandruff. Only Mm-hmm. mild variety of dandruff will respond to just dietary modifications and anti-dandruff shampoo. It is not, if it is not responding, try to change your shampoo and go for another combination. If it is still not responding, then visit a local dermatologist. Mm-hmm. Okay, very interesting, doctor. Another question, which is related to uh, something else, but still I'll ask. It's very interesting question. What are the best practices and treatment to prevent reduce sign of aging? Like कोई अपने See, आप को sign of aging, I'm like assuming that you're asking me about the face aging. yeah. So for face aging, uh, use of a good sunscreen is very, very vital or pivotal role in the anti-aging practices. So use a good quality sunscreen, whichever suits to your skin, SPF 50 plus. Use it Mm, twice a daily. And mm, depending upon age, your age group, your 40 plus, night retinol serum applications mm, and mm, regular exercise, then mm. face yoga, all this will help you to reduce the signs of aging. Okay. Okay, another question from the same viewer is, he's asking, doctor, without makeup, how your skin is clean? Can you give us some your skin resin tips? See, skincare routine is very important and it won't happen overnight. So you have to use this in your daily day-to-day practice. Like Mm, you use toothpaste for your like brushing and you don't feel it is a medicine. So in the similar way, for your skin, a good mm, sunscreen, mild cleanser, good mm, barrier repair moisturizer, all these three ingredients are very, very important. So use it regularly for mm, 3 to 6 months, you will notice a difference. डोंट यूज की सनस्क्रीन अभी मैं बाहर जा रही हूँ तभी मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, मुझे घर पे बैठ के जरूरत नहीं है। तो mm, ये अगर आप करोगे, स्किन का बेसिक केयर करोगे, आपका डाइट रिच होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करो, तो उससे mm. वो आपके स्किन पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट विल हेल्प यू। Okay, very interesting, doctor. I'll quickly take one last question from our audience because we are running out of time. Hi, doctor. My age is 35. I've been facing diabetes for 5 years now, but now doctor has added insulin in my course, and due to taking this insulin, I've been facing a lot of dandruff and also hair fall. So, is it because of taking insulin, or is any other problem, and I should visit to the doctor? See, insulin is not directly related to your hair loss. If that any of your physician has prescribed you insulin,
you should take it, because अगर इंसुलिन नहीं लोगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगा एंड उससे हेयर लॉस बढ़ेगा. ठीक है. Mhm. सो अगर आपको लग रहा है कि इंसुलिन के वजह से बढ़ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गो फॉर लाइक माइल्ड विटामिन जो होते हैं टैबलेट्स, बी कॉम्प्लेक्स, यू कैन ट्राई दैट फॉर 15-20 days. अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करो. Okay, okay, doctor. So finally, doctor, would you like to give any take-home message or any other suggestion to our viewers today? Maintain your stress-free, balanced lifestyle. It will reflect on your skin, hair, and dandruff also. And that is the key for everything in your dermatology. That is the take-home message. Thank you so much, doctor. Thank you so much for sharing all your expertise and all the information with us today and answering all the questions of our viewers today. I'm sure the viewers have found the session very helpful. Thank you so much, doctor. It was delight to have you, and thank you so much for your valuable time. Okay. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. Because of time limitation, I could not ask all the questions. But yes, if our doctor have some another time, if she is free, I will take her appointment and we'll come up with a new topic on hair and skincare and we'll discuss more. Thank Yes, you, definitely. doctor, for today, and have a very nice day. Take care. Bye bye.